Good morning, students. Hope so you all are doing well. Today, we will start for the new academic session 2020-21. But before that, I want few things to discuss with you all. As you all entered in college section this year, you may be little bit worried about your future. This is correct, as this is the time where you can shape and think what to be in future. Choosing a career stream is one of the most difficult moments in an individual's life. There are many options available for career for commerce students. As we all know that commerce students have various opportunities available. Scopes are also available for them as they are involved in the money matter. In commerce section, we have uh, different subjects. Some subjects are compulsory subjects and some subjects is optional for you all. It depends on you what subject you have to select. English subject is compulsory for you all. Economics, OC. These subjects are compulsory for you all. And you have optional subjects, that is SP and maths. Either you can choose SP or you can choose maths. Similar is for IT and Hindi also. And we are here to embark on a journey to learn economics. This word you are listening from 9th standard, right? So economics is a subject where all the things are directly or indirectly related with money. You can see a slide on your screen. It shows different small wordings in that. In that, each and every word is directly or indirectly related with money. The word economics has in its name only, if you can call it in Hindi, it is called as Arthashastra. Earth is related with money and Shastra means study of it. Whenever we are studying economics, we are studying the relations which is directly or indirectly related with money. Are you all getting? In that we are having various type of words such as wealth, business, finance, financing, revenue, investment, accounting. These words are directly or indirectly related with money. So in this, as we all know that our economic stability, somewhere it is affected during this hours, that is during this situation which we are facing, but somewhere we will cope up with that. Now I want answers from you all whether you anyone have any idea regarding the term economics. If yes, just let me know in comment section, and please feel free to ask any queries or any doubts you have. I'm waiting for your answers. Anyone know what is exactly the term economic means? As it is the subject which we are that we will learn. Students will get the attendance form, attendance link. You just have to link is sent in your YouTube chat box. You just have to put your attendance over there. You will get only 15 minutes for it. Afterwards, student won't be allowed to give attendance. Link is shown in your chat box.
Each and every student have to give their attendance. Yes, it deals with how human beings satisfy unlimited wants with limited means. It's called economics. Yes, way to utilize money. Correct, Aman? Come on, students, give answers. Anything comes in your mind by listening this word economics? Economics is derived from Greek word oikos and nomos. Correct. Economics is social science. Very good, Chetan. Anyone else? Can anyone tell me who is father of economics? Father of economics. Come on, students. I want the session interactive. I don't want just I'll speak and you will listen. The session should be interactive. Economic means management of household. Very good. Priyanka, I want the answer for who is father of economics. Yes, Aman. Adam Smith. Very good, students. Means somewhere you have studied economics in your ninth and 10th standard. Correct? We'll move ahead. Many students must have query in their mind that which book we have to refer. Just I have made one slide for you all so that you can understand that which book you have to refer. You have to refer government textbook, and I have given the image of it, that which textbook you have to refer. Only this textbook you have to refer for this academic session. Understood? Government textbook you have to follow. You will get this textbook in bookstore. Now coming to your syllabus part, the chapters which we are covering this year. See on the slide, you have total 10 chapters which you have to study throughout the year. These chapters are equally important as somewhere you are getting certain type of knowledge. Starting with very first chapter, the chapter name is Basic Concepts in Economics. In this, you will deal with what is economics all about. As we all know that today's world is marked by scientific inventions and discoveries. This remarkable progress, whenever we are thinking about that, all things comes under the learning of economics. We have to study all the branches which is related in it. So in first chapter, we will learn about the basic concepts which are generally used in economics. We will also learn about various definitions given by various authors, and that definitions is described in various ways. Some have given wealth oriented definition, some has given welfare oriented definition, some authors have given scarcity oriented definition. So all that we are going to learn in first chapter. That we'll discuss afterwards when we'll go in chapter detail, in detailed manner.
Then we are going to study about the branches of economics. In branches of economics, all you have heard this word micro and macro. Your economics is bifurcated into two parts. Economics is bifurcated into two parts, that is micro and macro. I know some students are from vernacular medium, so it is very difficult for them to hold English. See, I'm using very simple language. Try to learn it. If you want, I'll explain it in Hindi also. इकोनॉमिक्स जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, माइक्रो और मैक्रो. माइक्रो मीन्स whenever we are studying the things in a smaller pattern, छोटे छोटे लेवल पे जब हम लोग कोई भी चीज को स्टडी करते हैं वो माइक्रो में आता है. और मैक्रो, मैक्रो मीन्स व्हाट, whenever we are studying the things in aggregate. एग्रीगेट मतलब जब हम लोग एक साथ किसी भी चीज को स्टडी करते हैं. ठीक है, एक साथ मतलब लार्ज स्केल. whenever we are suppose if we are studying, I'll give you one simple example. If we are studying the things in a smaller pattern, इंडिविजुअलिस्टिक पैटर्न में जब हम स्टडी करते हैं, जैसे एक आदमी के इनकम के बारे में आप स्टडी करते हो तो वो किस में आता है, माइक्रो लेवल पे. एंड व्हेनेवर वी आर स्टडीइंग द इनकम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स ऑफ नेशन, यानी कि एक साथ जब चीजों को स्टडी करते हैं तो वो किस में आता है, आपका मैक्रो लेवल पे. फॉर एग्जांपल नेशनल इनकम, जब आप पूरे नेशन का इनकम स्टडी करोगे तब वो आपके किस में जाएगा, नेशनल इनकम में. देन वी विल स्टडी द बेसिक कंसेप्ट्स of microeconomics in chapter number 1. In basic concepts, we have to study want. What is want? We'll study what is goods and services. All are familiar with this word, goods and services. Utility. What is the term utility? Value, wealth, personal income, personal disposable income, economic activity, factors of production, etc. Understood? Means इकोनॉमिक्स का टर्म जो है, मतलब इकोनॉमिक्स किन टर्म्स किन शब्दों से जुड़ा हुआ है, वो सारे शब्दों के बारे में बेसिक कंसेप्ट वी विल स्टडी इन इकोनॉमिक्स. दैट दिस ऑल पार्ट वाज इन माइक्रो. इन मैक्रो लेवल we will study about national income. We will study about what is saving, what is investment, what is trade cycles, economic growth, economic development. These all parts will study in chapter number 1, that is basic concepts in economics. Correct, students? I hope all the students are understanding what is what we'll study in chapter number 1. Means in chapter number 1 you all need to study the basic concept which we'll study through which we will study this in this 2 years. Understood? Now coming to chapter number 2. Chapter number 2, the name of chapter is money. I think so each and every student is familiar with the word money. Money is nothing but the thing which we are using to live our life comfortably. Correct? So how the evolution of money took place. Earlier there was the currencies which we are using right now. Earlier we were not having that that means earlier we were not having the concept of money at all. We were using we were एक्सचेंजिंग द थिंग्स. चीजों को चीजों से हम लोग चेंज करते थे, मतलब कुछ पैसा कुछ मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं था उसके अंदर. तो बाटर बाटर एक्सचेंज बोलते थे उसको, बाटर सिस्टम जो है वो था. लेकिन अभी धीरे धीरे इन्वेंशंस और टेक्नोलॉजी के वजह से जो है धीरे धीरे इवोल्यूशन आया, मतलब मनी का चेंजेस आया. तो मनी किस तरीके से वो इवोल्यूशन हुआ, मतलब कैसे मनी जो है वो चेंज हुआ. अर्लियर एनिमल मनी से फिर मेटेलिक मनी आया, फिर मेटेलिक कॉइन्स आए, फिर पेपर मनी आया. पेपर मनी के बाद नाउ रिसेंटली वी आर यूजिंग बैंक मनी, क्रेडिट मनी, प्लास्टिक मनी. ठीक है. देन व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ मनी दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन चैप्टर नंबर 2. वी आर ऑल्सो will also study about the functions of money, which is bifurcated into 3 types, that is primary functions, secondary functions, and contingent functions. Hope so no one is having any doubt in 2 chapters.
See, we will elaborate the chapter when we will go in deeper part. Today is just first introductory lecture, so just I wanted you all to know that which chapters you are going to study. Correct? Hope so. Everyone is getting. Anyone having any doubt? Just write in comment section. Shall I proceed further? In chapter number 3, what you have to study? Plastic money. Plastic money means what? The cards which we are using right now. ATM card, debit card. That is plastic money. Acha, Raj, you want me to repeat the first chapter again? In first chapter, I have not started the chapter yet, but in first chapter, you have to study the basic concepts which is related in economics. So in that we will study about the different this one definitions of economics given by various authors. We'll study the basic concepts which is related with microeconomics as well as microeconomics. मतलब कौन से concepts है जैसे want क्या होता है फिर उसके बाद गुड्स एंड सर्विसेज क्या होते हैं यूटिलिटी का मतलब क्या है वैल्यू क्या होता है वेल्थ क्या होता है इनकम क्या होता है पर्सनल इनकम क्या होता है डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है फिर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हम लोग यूज करते हैं वो क्या है फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वर्ड्स जैसे कि नेशनल इनकम सेविंग इन्वेस्टमेंट ट्रेड साइकिल्स इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो सब आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 1 में check money check means what check is a instrument which you are presenting in the bank and उसको present करके you can withdraw the money it is a paper instrument paper money में आता है ठीक है now coming to students you'll get the notes simultaneously you will I'll make the arrangement to give you notes in your groups made by college now coming to chapter number 3 in chapter number 3 the name of the chapter is partition values I think so everyone in your 10th standard and 9th standard you were having a subject algebra correct in algebra you have studied you have done the sums or numericals which was based on arithmetic mean mode median have you ever heard these words arithmetic mean mode median so that things we are going to study in this also partition value in that this chapter is based on numericals so there are chances in exams you can score marks in it so in this we have to study about arithmetic mean we have to solve the sums also we will study about mode we'll study about median we'll also study about the part of median that is quartiles deciles and percentiles we'll solve sums also and this chapter number 3 is totally based on these three terms that is arithmetic mean mode median in median you have to study deciles quartiles and percentiles so this chapter is totally based on numericals chapter number 3 partition value this chapter would be easier for you as you have already solved it in your 10th standard algebra now coming to chapter number 4, as we are in a state Maharashtra, so it is necessary for us to study the economy of Maharashtra, right, students? So, economy of Maharashtra in this we have to study about the state Maharashtra, and also we have to study the features of Maharashtra. In this, will study about the various sectors which we can
bring forward for the development of Maharashtra, right? So we have to focus on agricultural sector, the foreign direct investment for which we are using it. We have to see about industrial development, and we have to also focus on the service sectors. So in chapter number 4, that is the economy of Maharashtra, in this we will study about whole things about Maharashtra, how we can improve the economic status of our state. We have to in this we will study about tourism also. We'll study about entertainment industry, hospitality, the various service sector industries, which is helpful to boost out the economy of Maharashtra. Exam timetable, student, this is your second lecture. Exam timetable you'll get afterwards. Just focus on the things which you have to study right now. Don't think about future well in advance. Now coming to chapter number 5, rural development in India. As we all know that Indian economy is predominantly a rural economy. Economic growth of the country is driven by its rural development. So रूरल एरियाज को यानी कि विलेजेस को डेवलप करना हमारे लिए जरूरी है. तो इस चैप्टर में यानी चैप्टर नंबर 5 में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से रूरल एरियाज को या फिर रूरल डेवलपमेंट को हम आगे ले जाए. एज वी ऑल नो दैट अगर पॉपुलेशन वाइज अगर हम लोग देखेंगे तो रूरल का पॉपुलेशन जो है, द पीपल दोज हु आर रिसाइडिंग इन रूरल एरिया, वो ज्यादा है. तो हमारे लिए क्या जरूरी है कि रूरल एरिया को हम डेवलप करें. तो रूरल डेवलपमेंट में हर चीज को डेवलप करने की जरूरत है. जैसे एग्रीकल्चर को भी डेवलपमेंट करने की जरूरत है, इंडस्ट्रीज को भी डेवलप करने की जरूरत है, एजुकेशन को भी थोड़ा बहुत वहां पे विकसित करने की जरूरत है, और सर्विसेज इंडस्ट्रीज जो भी है, हेल्थ सेक्टर्स, फैमिली वेलफेयर, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, मतलब जो शहरों में है हमें ये सोचना है कि वो आगे जाके रूरल डेवलपमेंट में भी आगे बढ़े. तो ये रूरल डेवलपमेंट को किस तरीके से हम डेवलप कर सकते हैं, हाउ वेरियस टाइप ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज बी गिवन बाय बैंक टू देम, ताकि वो लोग आगे अपने आप को डेवलप करें. और रूरल एरिया डेवलप हुआ तो अपने आप जो है रूरल एरिया अगर डेवलपमेंट, अच्छा आई विल गो स्लो, रूरल एरिया अगर डेवलप हुआ तो अपने आप कंट्री का भी डेवलपमेंट हो जाएगा. As we all know that cities are developing at a great pace, so there is a need for rural area that has to be developed. रूरल मतलब विलेज, रूरल का मतलब है विलेज एरिया. तो विलेज एरिया में ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन रह रहे हैं, तो आप आपका भी मतलब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि किस तरीके से हम लोग रूरल एरिया को डेवलप कर सकें. आर यू ऑल गेटिंग? This you have to deal in chapter number 5. Will in chapter number 5 we will also see various type of banks, those who are giving loans to weaker sections of the society residing in village. जो मतलब weaker sections है जिनको पैसों की जरूरत है, पैसे के तौर पे उनको किस तरीके से मदद मदद कर सकते हैं और कैसे उनको आगे बढ़ा सकते हैं. तो बैंक्स ने भी अलग अलग स्ट्रेटेजीज अपनाए, अलग अलग तरीके अपनाए कि उनको कैसे आगे लेके जाए. ठीक है. होप सो नो वन इज हैविंग एनी डाउट टिल चैप्टर नंबर 5. स्टूडेंट्स, आर यू ऑल गेटिंग? जस्ट लेट मी नो. कुछ भी डाउट है अगर तो कमेंट सेक्शन में प्लीज लिख के भेजो. रितिका, व्हाट थिंग यू वांट टू बी रिपीटेड? See, I'm just giving you the introductory part about topics which we have to cover. When we will study the chapter, we will go in detailed manner. Now just now just you have to just what things you have to cover in chapters that we have to discuss, because this is just our introductory lecture. Shall I move ahead?
फोर्थ चैप्टर we'll study about economy of महाराष्ट्र. महाराष्ट्र में कैसे मतलब क्या कर सकते हैं कि हम लोग इकोनॉमी मतलब महाराष्ट्र को इम्प्रूव कर सकते हैं. हाउ वी कैन पुट स्किल्ड मैन पावर, इंफ्रास्ट्रक्चरल मतलब जो रोड्स रेलवेज ये सब है उसको कैसे हम डेवलप कर सकते हैं. स्किल्स कैसे अपना डेवलप करें, ये सारा चीज जो है हम लोग चैप्टर नंबर 4 में डेवलप कर सकते हैं. Any doubt, students, till chapter number 5? See, students, all the chapters are equally important. Due to this pandemic situation, some points from the chapters are reduced, but whole chapter is not deleted. Chapter number 2 में we have to study about money. Money का evaluation कैसे हुआ, and the recently the types of money which we are using. Now coming to chapter number 6, population in India. As we all know that India is a developing country, correct? We are not in a state where we can call us as underdeveloped, or we cannot call us as developed country. We are in a state where we can call ourselves as developing country, right? हम लोग ना पूरी तरीके से विकसित हैं, ना हम लोग पूरी तरीके से विकसित है, और ना हम लोग अंडर डेवलप्ड है. हम लोग अभी धीरे धीरे हमारा विकास चल रहा है, तो हम लोग एक डेवलपिंग स्टेज में है. So it is essential for us to develop ourselves both quantitatively as well as qualitatively. क्वांटिटी वाइज भी हमें डेवलप करना और अपने आप को क्वालिटी वाइज भी इम्प्रूव करने की जरूरत है. तो syllabus is not syllabus is not means chapters they have not received. Some points from the chapters are omitted. That while we will study the chapter, we'll come to know. Population, we all know that India's population somewhat it was 121.02 crores. So India ranks second after China. We are at the second rank in terms of population. So in chapter number 6, we will study about population in India. And also we will study about the stages of demographic transition that from earlier till from 1911 till 2011, and how what are the causes of population explosion, why the population is increasing. While studying, we will come to know about the chapters which has been reduced. When we will study the chapter in detail pattern at that time, what we will do, we will discuss it in briefly. What topics you have to study and which topic you don't have to study. And at the end, don't worry if I was passed. At the end, I will come to I will repeat the topics again. This is just our introductory part. So try to understand what points we have to cover in each and every chapter. In population of India, we all know that human resources are very much essential for us, as human resource development brings out various type of development, correct? So in population in India, we will study about
this part only. In chapter number 7, we will study the major challenge which we are facing, that is the problem of unemployment. See students, the difference between rural and urban. Rural area means what? Village side. And urban is city. Hope so everyone is getting. See, I'll repeat the chapters again afterwards at the end. Now just focus on chapter number 7. Chapter number 7, in chapter number 7 we will study about the unemployment situation which we are facing. हिंदी में उसको बेरोजगारी बोलते हैं. Normally whenever we are talking about this part, unemployment is a situation where the person is able to do the work but he is not getting the job. हमारे कंट्री में नॉर्मली अगर हम देख रहे हैं, अगर हमारे कंट्री में हम देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन जो है वो ज्यादा है. ठीक है, मतलब लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो अवेलेबल ही नहीं है. इसीलिए पढ़ने लिखने के बावजूद भी लोगों के पास जो है काम अवेलेबल नहीं है. सम पीपल आर वेटिंग फॉर, मतलब अच्छे काम के लिए उन लोग वेट करते रहते हैं, तो उसके वजह से वो लोग अनएम्प्लॉयड सिचुएशन फेस करते हैं. तो यहाँ पे इन दिस चैप्टर, इन चैप्टर नंबर 7 वी विल स्टडी द मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है. विल ऑल्सो स्टडी द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट के कितने प्रकार है. उसके अंदर मेन दो टाइप है, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट. रूरल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब गांव साइड में जो अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है उसमें दो है, सीजनल और डिसगाइज. सीजनल मतलब आपको पता है कि गांव साइड में खेती जो है 12 महीने नहीं रहती, 5 से 6 महीना काम रहेगा और उसके बाद जो है लोगों के पास काम नहीं रहता. तो ये सीजनल सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एक अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है जो कहाँ पे पाया जाता है, रूरल साइड. और अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट दूसरा है. इसमें ऐसा होता है कि मतलब नॉर्मली जब भी डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में आप बात करते हो तो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट में मतलब ये परिवार के संबंध में ज्यादा होता है. मतलब गांव में कैसा होता है कि अगर आपके घर में 6 लोग हैं तो सारे लोग जो है वो खेती के काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं. तो यहाँ पे कैसा है, आप लोग जब भी 4 लोग अगर सपोज काम कर रहे हैं और आपका प्रोडक्शन 50 केजीज ही है, अगर उसमें 6 लोग काम कर रहे हैं तो फिर भी आपका प्रोडक्शन 50 केजीज ही रहेगा. तो मतलब 2 जन जो काम कर रहे हैं वो मतलब वो क्या है, वो लोग मतलब उन लोग का कुछ प्रोडक्शन में आउटपुट ही नहीं है. तो ऐसे टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को डिसगाइज बोलते हैं. मतलब जो काम 4 लोग कर सकते हैं वो काम जो है वो 6 लोग कर रहे हैं, लेकिन वो 2 लोगों का जो है अनएम्प्लॉयमेंट में मतलब वो लोग अनएम्प्लॉयड ही कहलाएंगे क्योंकि उनका प्रोडक्शन में कुछ भी योगदान नहीं. ठीक है, तो ये आप इसमें पढ़ोगे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के रूरल पार्ट में. फिर अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट में मतलब शहरों में पाए जाने वाले अनएम्प्लॉयमेंट. शहरों में तो कई टाइप के पाए जाते हैं, जैसे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब पढ़े लिखे होने के बावजूद आपको काम नहीं मिलता और आप उसके वजह से अनएम्प्लॉयड हो. इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब इंडस्ट्रीज ना चलने के वजह से लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं. जैसे कि ये ट्रेनिंग फैसिलिटीज नहीं मिला उन्हें या फिर लेबर अवेलेबल नहीं है, तो इंडस्ट्रीज में जो अनएम्प्लॉयमेंट हो गए हैं वो इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट में अलग अलग टाइप है. टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. मतलब अनएम्प्लॉयमेंट के जितने भी पार्ट्स है वो आपको इसमें ही स्टडी
करने, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया एंड विल आल्सो फाइंड आउट द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण क्या है, ठीक है, और गवर्नमेंट उसको रोकने के लिए क्या कर रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग चैप्टर नंबर 7 में स्टडी करेंगे, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। Coming to next part, that is poverty in India. This is also one of the major challenge which we are facing. Poverty in India. Poverty मतलब गरीबी. Poverty is also one of the major challenges which we are facing Indian economy में जो face हो रहे हैं. ये एक socio economic phenomenon है. Poverty मतलब when a person is not able to fulfill his basic necessities of life. आदमी अपना बेसिक जरूरतों को अगर वो पूरा नहीं कर पाता है तो वो गरीबी मतलब गरीब कहलाता है। तो पावर्टी ये भी एक प्रॉब्लम है जो कंट्री फेस कर रही है। तो इन दिस चैप्टर विल स्टडी अबाउट द पावर्टी सिचुएशन विच यू आर फेसिंग। इसमें हम लोग दो मेन कंसेप्ट पढ़ेंगे पावर्टी के, दैट इज एब्सोल्यूट पावर्टी एंड रिलेटिव पावर्टी। एब्सोल्यूट पावर्टी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज। इसमें भी रूरल और अर्बन में डिवीजन हुआ है, मतलब गांव साइड का कैलोरी का पैटर्न अलग है और शहरों का अलग है। गांव साइड का 2400 कैलोरीज पर पर्सन है और शहरों का 2100 कैलोरीज पर पर्सन है। मींस अगर आदमी के बॉडी को 2400 कैलोरीज अगर उसको नहीं मिलता रूरल एरिया में तो वो एब्सोल्यूट पुअर है, और अगर 2100 कैलोरीज नहीं मिलता है अर्बन एरिया में यानी शहरों में तो वो पुअर कहलाएगा। अगर एवरेज वाइज अगर आप देखोगे तो वो 2250 कैलोरीज है। और रिलेटिव पावर्टी मींस व्हाट, ये जो है इट इज नॉट, इट इज जज ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के ऊपर डिपेंड करता है। देन वी विल स्टडी अबाउट पावर्टी लाइन। पावर्टी लाइन एक इमेजिनरी लाइन है, मतलब पावर्टी गरीबी रेखा के ऊपर कौन है, गरीबी रेखा के नीचे कौन है। देन वी विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ पावर्टी। फिर कॉजेज देखेंगे हम लोग, पावर्टी के कारण क्या है, किस वजह से गरीबी जो है वो बढ़ रही है। एंड एट लास्ट वी विल सी द मेजर्स विच इज टेकन बाय गवर्नमेंट टू इरेडिकेट पावर्टी, मतलब पावर्टी को निकालने के लिए गवर्नमेंट ने क्या मेजर दिया है। These things you will study in chapter number 8. Understood, students? Now coming to chapter number 9. ये तीन प्रॉब्लम्स है मतलब जो हम लोग फेस कर रहे हैं चैप्टर नंबर, इन चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8। द थ्री मेजर डिफिकल्टीज दैट अवर इंडियन इकोनॉमी इज फेसिंग। अगर ये तीनों चीज अगर सॉल्व हो जाए, पॉपुलेशन का प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम और पावर्टी का, ऑटोमेटिकली आपके कंट्री का जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चैप्टर नंबर 9 में we'll study about the economic policy, new economic policy which was framed in the year 1991। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ये जो है आपका 1991 में फ्रेम आउट हुआ था एट द एंड ऑफ जून। ये इसलिए फ्रेम हुआ था क्योंकि 1950 से लेके 1980 तक का जो ड्यूरेशन था, that duration, in that duration our country faced a lots of trouble related with money। so उस टाइम पे एक ड्यूरेशन था which was known as लाइसेंस राज। लाइसेंस राज मतलब हम छोटे से छोटा भी बिजनेस स्टार्ट करने जाते थे तो हमें हर एक चीज के लिए लाइसेंस कंपलसरी था। तो जो लोग बिजनेस स्टार्ट करना भी चाह रहे थे वो लाइसेंस के झमेलों के वजह से जो है वो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर रहे थे। तो एट द 1980 तक वो ड्यूरेशन चला, फिर उसके बाद धीरे 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 वो लोग ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाने का सोचा इन द ईयर 1981 आफ्टरवर्ड्स, लेकिन उसको लाते लाते और टाइम लग गया एंड फाइनली इट केम इट टू एग्जिस्टेंस इन द ईयर 1991। तो 1991 में वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या था, मतलब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेम्ड आउट हुआ
तो उन लोग ने मेन उस पे 3 कंपोनेंट्स के ऊपर वो लोग ने फोकस किया था, दैट वाज एलपीजी, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो वही 3 चीजों के बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 9 में पढ़ने वाले। आर यू ऑल गेटिंग स्टूडेंट्स, एनी डाउट इन चैप्टर नंबर 9? So now moving to the last chapter, chapter number 10, economic planning in India. In chapter number 10, we will study about the planning which must be done to bring our economic ahead. So in economic planning, we'll study about how government should plan our economy so that we can maintain our economic status, economic value. So in this, we will study about the various 5 years plan which came into existence from the year 1951, and the main objective behind which it was formed. वो सब चीजें आप इसमें पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 में। तो इकोनॉमिक प्लानिंग में कौन सी चीजें जरूरी होनी चाहिए, इकोनॉमिक प्लानिंग में क्या क्या स्ट्रक्चर्स है, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन लाने हैं, वो सारी चीज आप इसके अंदर चैप्टर नंबर 10 में पढ़ने वाले। होप सो एवरीवन इज गेटिंग नाउ। The students, those who have not understood, I'll just repeat. In FYJC, in economics, you will study chapter number 10 chapters total, and in that, in chapter number 1, you will study the basic concepts in economics, means the concept which is important and which is very much essential. That is in the subject, the basic concepts in economics. In this, we will study about meaning definitions given by various authors. We'll study about the basic concept which is related with micro and macroeconomics. माइक्रो में कौन से टर्म्स यूजफुल है, मैक्रो में कौन से टर्म्स यूजफुल है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, वो सारी चीजें हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 1। इन चैप्टर नंबर 2 आप मनी के बारे में पढ़ोगे, मनी का इवैल्यूएशन, ऑल्सो जैसे आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा तो आपका ह्यूमन बॉडी फंक्शन नहीं करेगा, वैसे ही इकोनॉमी को रन करने के लिए मनी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो बिना मनी के आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो मनी एक बहुत ही एसेंशियल कमोडिटी है, एक एसेंशियल चीज है जो आपके इकोनॉमी को फंक्शन करने में हेल्प आउट करता है। तो मनी एक बहुत ही जरूरी चीज है। तो मनी कैसे आया, मनी का इवेल्युएशन कब से हुआ, पहले पैसा नहीं था तो कौन सा सिस्टम हम लोग यूज करते थे, फिर उसके लिमिटेशंस आए, फिर कौन से टाइप्स हम लोग मनी के पढ़ेंगे, वो सारी चीज करंटली पेपर मनी, मेटेलिक मनी, जो भी मनी आप लोग यूज करोगे वो चैप्टर नंबर 2 में आप पढ़ने वाले हो। चैप्टर नंबर 3 जो है वो आपके अलजेब्रा के ऊपर बेस्ड है, ये न्यूमेरिकल्स पे बेस्ड है, ये जो आपने ऑलरेडी 9th और 10th में स्टडी किया। उसके अंदर एरिथमेटिक, मीन, मोड, मीडियन, मीडियन के अंदर डिसाइल्स, परसेंटाइल्स, क्वार्टाइल्स, ये सारे पार्ट्स आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। ये चैप्टर जो है आपका स्कोरिंग बढ़ाता है जब अभी क्योंकि इसमें देर आर नो चांसेस ऑफ कटिंग द मार्क्स, और आप आसानी से स्कोर कर पाओ। इफ योर सम इज करेक्ट यू विल गेट फुल मार्क्स इन दैट। थियोरेटिकल पैटर्न में कुछ मार्क्स कटते हैं आपके, लेकिन ये प्रैक्टिकल्स में आपको पता है कि आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। फिर उसके बाद इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में आप महाराष्ट्र स्टेट में पढ़ रहे हो तो इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो वो सारा मतलब महाराष्ट्र में किस तरीके से हम लोग इकोनॉमिक स्टेटस डेवलप कर सकते हैं, किस तरीके से इकोनॉमी वैल्यू बढ़ा सकते हैं, वो सारा चीज आप महाराष्ट्र के बारे में चैप्टर नंबर 4 में पढ़ोगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट किस तरीके से स्किल्ड मैन पावर के ऊपर फोकस कर रही है, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट किस तरीके से टेक्नोलॉजी एडवांस करने में फोकस कर रही है, गवर्नमेंट किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर रही है, वो आप चैप्टर नंबर
4 में पढ़ोगे, लेकिन ये टोटली इट इज ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है। उसके बाद है रूरल डेवलपमेंट। रूरल एरिया मतलब विलेजेस। वी ऑल नो दैट आपका जो ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन है वो रूरल साइड में रहता है। शहरों को तो डेवलप किया जा रहा है पर रूरल को डेवलप जो है डेवलपमेंट नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से किस तरीके से हम लोग रूरल एरिया को डेवलप कर सकते हैं, वो सारा चीज आप चैप्टर नंबर 5 में पढ़ने वाले हो। फिर उसके बाद आप चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8, ये मेजर चैलेंजेस है जो हमारा कंट्री इस समय फेस कर रही है। बढ़ता पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन और पावर्टी, ये तीनों मेजर प्रॉब्लम्स है जो आप फेस कर रहे हो। तो ये 3 चैप्टर्स जो भी है ये आपका चैलेंजेस है विच वी आर फेसिंग। तो ये चैलेंजेस जो भी है इसको किस तरीके से हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन जो है वो कम किया जा सकता है, पावर्टी गरीबी जो है वो किस तरीके से कम हो सकता है। ठीक है। पॉपुलेशन को रोकने के लिए क्या किया जाए। फिर उसके बाद ये उसके कितने टाइप्स है, गवर्नमेंट क्या स्ट्रेटेजीज यूज कर रही है, वो आप इस चैप्टर, ये 3 चैप्टर्स में पढ़ोगे। मतलब ये 3 चैप्टर्स जो है दैट दिस चैप्टर्स इज बेस्ड ऑन चैलेंजेस व्हिच आवर कंट्री इज फेसिंग। और लास्ट के 2 चैप्टर्स जो है आपके डेवलपमेंट के ऊपर है। मतलब एक तो इकोनॉमी पॉलिसी आया था, इकोनॉमी पॉलिसी आने के बाद 1991 में क्या चेंजेस आया वो आपको इसमें बताया है चैप्टर नंबर 9 में। इसमें आप एलपीजी के बारे में पढ़ोगे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये 1991 में जब एनईपी यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर्म हुआ था तब उसमें क्या क्या चेंजेस आए, तो वो सारी चीजें आप चैप्टर नंबर 9 में पढ़ने वाले हो। और 10 में द प्लानिंग विच फ्रॉम अर्लियर स्टेज, लास्ट स्टेज से अर्लियर स्टेज से वो प्लानिंग किस तरीके से हो रहा है। So these topics, when we will go in detailed manner, when we will study the chapters, each and every chapters thoroughly, then in that you will come to know. So इसके अंदर जो है आपको ध्यान देना है कि आप किस तरीके से जो है चैप्टर्स को मतलब आपको प्रिपेयर करने से। इकोनॉमिक्स जो है ये अगर आप थियोरेटिकल मैनर में अगर आप पढ़ोगे तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन इसको प्रैक्टिकल वे से अगर आप सोचोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। ठीक है। होप सो एवरीवन इज गेटिंग। तो ये सिर्फ चैप्टर्स थे, आई हैव जस्ट गिवन द डिस्क्रिप्शंस ऑफ चैप्टर। और जो चैप्टर्स ओमिटेड हुए हैं गवर्नमेंट के थ्रू, चैप्टर्स ओमिट नहीं हुआ है। वो स्टूडेंट्स, सम स्टूडेंट्स वर आस्किंग इन चैट बॉक्स की चैप्टर्स कौन से ओमिट हुए। चैप्टर्स आर नॉट ओमिटेड, some topics are omitted from the chapter, but if you will understand the chapter, if you will understand the points well, then it would be easier for you to study. तो यहाँ पे हर एक पॉइंट को अगर आप देखोगे तो दे आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। और इसका कहीं ना कहीं कुछ पार्ट जो है चैप्टर नंबर 1 का कुछ पार्ट और लास्ट के चैप्टर्स के कुछ पार्ट जो है वो आपको 12th स्टैंडर्ड में भी यू विल सी। ठीक है। तो ये बेसिक है, मतलब दिस इज द बेस पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक्स व्हिच यू हैव टू स्टडी at and in 12th standard you will study about micro and macro in detailed pattern. In that concept जो इंक्लूड हुआ है वो डिमांड और सप्लाई का हो जाता है। तो वो आपको अगले साल के लिए पढ़ना है, यानी चैप्टर नंबर 12 में आप सॉरी नेक्स्ट ईयर 12th स्टैंडर्ड में जब आप चले जाओगे तब आपको पढ़ना है वो। यहाँ के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है। ठीक है। दिस 10 chapters you will study. Now I am moving to the next slide. Let's recall what is economics. See, today we will not start with the chapter, we'll just recall कि economics क्या है। अगर आप देखोगे तो आपके दिमाग में भी ये कंफ्यूजन रहेगा। नॉट ऑल स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में कंफ्यूजन रहेगा। अब तक हम लोग पढ़ रहे इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स, पर ये इकोनॉमिक्स है क्या, मतलब इकोनॉमिक्स एक्चुअल में आपको क्या बता रहा है। तो there is a question mark in your head somewhere कि what is economics. So that question when comes in your mind, तो इकोनॉमिक्स में एक्चुअल में है क्या वो आपको यहाँ पे पता चलेगा। ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट व्हाट इज इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है। इकोनॉमिक्स इज व्हाट, इट इज अ सोशल साइंस which is concerned with the production, distribution and consumption of goods and services. I hope so all of you are aware of this word production,
डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। प्रोडक्शन के बारे में जब भी आप बात करते हो तो प्रोडक्शन इज नथिंग बट कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। जब भी आप रॉ मटेरियल को यानी कि कच्चे माल को पक्के मटेरियल में कन्वर्ट करते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इज डन इन फैक्ट्रीज। प्रोडक्शन किस में किया जाता है? फैक्ट्रीज में किया जाता है, क्योंकि वहीं पे जो है चीजों को बनाने का काम होता है। तो इकोनॉमिक्स में आपको प्रोडक्शन, इट इज कंसर्न विद प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन के ऊपर फोकस करता है वो। डिस्ट्रीब्यूशन, जब आप चीजें प्रोड्यूस करते हो तो आपका अगला स्टेप आ जाता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। डिस्ट्रीब्यूट करना इज नथिंग बट सेलिंग, उसको बेचना। कभी भी कोई भी बिजनेस फर्म होता है वो प्रोडक्शन की उम्मीद से करता है कि उसको आगे जाके बेच सके। करेक्ट। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स। और खाली डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं, बल्कि डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वो चीजें कंज्यूम भी होनी चाहिए, यानी इट शुड ऑल्सो बी कंज्यूम। कंज्यूम्ड, अगर कोई भी चीजें कंज्यूम नहीं होगी यानी कोई भी चीजें अगर यूज नहीं होगी, कंजम्पशन इज नथिंग बट द यूज ऑफ दैट प्रोडक्ट। कस्टमर्स जो यूज करते हैं, कंज्यूमर्स जो प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। यानी इकोनॉमिक्स ये तीनों चीजों पे फोकस करता है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज कंजम्पशन। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में if you will see the slide, economics is the slide that deals with the satisfaction of unlimited human wants with limited resources. सिंपल वर्ड्स में अगर आप उसको देखोगे तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा साइंस है जो सेटिस्फाई करता है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। वी ऑल नो दैट ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, लेकिन हम लोग उसको लिमिटेड, अपने हमारे पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेस है, जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेस है, उससे पूरी तरीके से सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। सेटिस्फाई मीन्स संतुष्टि। ठीक है, नीचे एक इमेज दिया हुआ है, वांट्स एंड नीड्स। नीड्स, आदमी की तीन ही जरूरत है पहले के कंपैरिजन में अगर देखेंगे तो। नाउ इन टुडेज क्राइटेरिया अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें उसके अंदर एड अप हुई है, लेकिन पहले के नीड्स अगर देखेंगे तो ह्यूमन बीइंग का तीन ही नीड्स था, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, लेकिन वांट्स में अगर आप देखोगे तो देर आर अनलिमिटेड वांट्स। आदमी को बहुत सारी चीजें चाहिए, जैसे सेकंड साइड इमेज का अगर आप देखोगे तो कार, मोबाइल फोन, हॉलीडे पैकेजेस, नए कपड़े, एंटरटेनमेंट, बंगलोज, फ्लैट्स। तो ये सब क्या है? ये सब वांट्स है, मतलब आदमी को चाहिए, ये अनलिमिटेड है। अगर ह्यूमन बीइंग, आप एक ह्यूमन बीइंग के तौर पे सोचोगे तो आपके दिमाग में भी बहुत सारे वांट्स रहेंगे, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। बट टू सेटिस्फाई दैट वांट, ईच एंड अल्टीमेट रिसोर्स दैट वी वांट, दैट इज व्हाट मनी। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि हमारे पास जितना भी लिमिटेड रिसोर्स है, यानी जितना भी पैसा है, उससे हम लोग अपने आप को मैक्सिमम सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। तो इकोनॉमिक्स में हमें यही चीजें बताई जाती है, इसलिए इसको सोशल साइंस बोला, मीन्स इट इज अ सोशल साइंस। अगर दोनों ऊपर का आप डेफिनेशन देखोगे तो उसमें एक तो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन बता रहा है, और एक इकोनॉमिक्स एक ऐसा साइंस है जो बता रहा है कि अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स को आप किस तरीके से अपने लिमिटेड रिसोर्स से फुलफिल कर सकते हो। होप सो एवरीवन इज गेटिंग, no one is having any doubt in it. Now we will see the derivation of the word economics. See in the next slide, economics word is derived from two Greek words, oikos and nemion. Oikos means a house, and nemion means is to manage. So when we will mix these two terms, we will come to know that economics is nothing but managing a household using the limited funds available in the most satisfactory manner possible। यानी कि आपको किसी भी तरीके से मैनेज करना है ताकि जो भी आपके पास फंड्स हो, वो फंड्स को आप इस्तेमाल करके
अपने नीड्स को सेटिस्फाई कर सको प्रॉपरली। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का मेन मतलब यही होता है कि यू विल सेटिस्फाई योर अनलिमिटेड वांट्स विद योर लिमिटेड रिसोर्सेज। तो ये जो वर्ड डिराइव हुआ है ओइकोस एंड नेमेन, इसका भी मतलब यही है। दिस टर्म इकोनॉमिक्स वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, that is oikos and nemes. See, this is just for your information purpose that इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स व्हाट इज इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट, ये सब पता होना चाहिए आपको। we have not entered into the chapters now. I'm just giving you the description about the subject. Coming to the introduction part for economics, that is again the same thing we will study. Economics is a science that deals with production, exchange and consumption of various commodities in economic system. Means economic is a science which deals with, again we have studied it in previous slide. It deals with production, exchange is nothing but distribution and consumption of various commodities which is produced in factory or which is produced in any organization or business firm. So there are two major factors which are responsible for the emergence of economic problems. That is unlimited human wants, and second one is scarcity of available resources. Means you are having limited resources, but with that limited resources you have to satisfy your unlimited wants so that uh, you are getting maximum satisfaction. So there are two major factors which are responsible for any economic problem. If you are having limited resources, then you are trying to satisfy yourself with that particular limited resources so that your wants are satisfied. मीन सारा डेफिनेशन अगर आप देखोगे, सब मीनिंग्स जो है वो एक ही जगह पे आपको लेके जा रहा है. The study of how individual and society choose to utilize scarce resources to satisfy unlimited human wants. These wants encompass all goods and services that individual desire, including food, clothing, shelter, and anything else that enhance the quality of life. Again, see the same thing they are trying to say. That is, individual and society means they are using their limited resources to satisfy unlimited human wants. And all goods and services, whatever you are purchasing, including food, clothing, shelter. What is the main purpose in your mind? Your main purpose in the mind is what? To enhance the quality of life. आपका life का आपका life जो है उसका quality वो improve हो, उसके लिए आप सोचते हो कि किस तरीके से हम लोग क्या करें, क्या खरीदे, क्या पहने, क्या परचेज करें कि हम मतलब हमें सेटिस्फेक्शन मिले. बिकॉज अल्टीमेट हमारा गोल क्या है? सेटिस्फेक्शन. तो ह्यूमन बीइंग का सेटिस्फेक्शन, यही चीज है आपको याद रखना है कि आपको आपके पास जितने भी कम से कम आपके पास जो भी रिसोर्स है, कम से कम पैसों में आप उससे सोचोगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा जो है सेटिस्फेक्शन मिले. तो ये चीजें जो है हमें इकोनॉमिक्स से पता चलती है. ठीक है. सी देयर इज वन कार्टून पिक्चर. इन दैट वी विल सी कि एक आदमी जो है पैसे का पोटला लेके जा रहा है. ठीक है. मतलब ह्यूमन बीइंग के मन में हमेशा क्या आता है कि वी हैव टू अर्न मोर. सो यहाँ पे आप whenever we are always trying to earn more. मतलब ज्यादा से ज्यादा आप कमाने की कोशिश करते हो. किस लिए आप कमाने की कोशिश करते हो? so that you are satisfying your wants, and human wants are unlimited. so economics में you have to कम भी रहेगा तो आपको ये देखना है कि आप सेटिस्फेक्शन आप किस तरीके से कर रहे हो अपने आप.
Economics is concerned with the study of economic problems that arise because of human wants are unlimited and resources to satisfy those wants are limited. And these scarce resources have alternative uses. Means what? Human wants are प्रॉब्लम क्यों अराइज होता है बिकॉज वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड लेकिन जो रिसोर्स है हमारे पास अवेलेबल वो लिमिटेड है अगर दोनों चीजें अनलिमिटेड होती तो प्रॉब्लम होता ही नहीं ये इसके वजह से आपका प्रॉब्लम अराइज हो रहा है सो इकोनॉमिक आपका जनरली इट फोकसेस on the rational management of scarce resources in order to maximize economic welfare. Hence, economics is about making choices in the backdrop of scarcity. इकोनॉमिक्स मेनली किस पे फोकस करता है किस तरीके से कम रिसोर्सेस में आप लोग ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक मतलब सामने वाले को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर सको सो आई होप विद दिस 2 और 3 स्लाइड्स सबको इकोनॉमिक्स का मतलब एग्जैक्ट क्या है मतलब इकोनॉमिक्स का मीनिंग जो है एटलीस्ट यू हैव अंडरस्टूड नाउ वी विल मूव टू द टर्म इकोनॉमी सी व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमी के बारे में जब भी आप बात करते हो तो एक ये ऐसा सिस्टम है जहाँ पे ह्यूमन बीइंग जो है वो सेटिस्फाई करना चाह रहा है अपने वांट्स को थ्रू द प्रोसेसेस लाइक प्रोडक्शन कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज मींस इन शॉर्ट आप बोल सकते हो कि ये 4 मेन कंपोनेंट्स है इकोनॉमी रन करने के लिए वो 4 मेन कंपोनेंट्स को डिटेल में नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस स्लाइड इकोनॉमी के 4 मेन कंपोनेंट्स है वो 4 मेन कंपोनेंट्स क्या है प्रोडक्शन कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज प्रोडक्शन सभी को पता है कि प्रोडक्शन क्या है प्रोडक्शन इज नथिंग बट we'll see the meaning which is given in the slide it is defined as creation of utility it is process in which inputs are transformed to goods or services तो प्रोडक्शन मतलब क्या क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी मीन्स व्हाट यू आर मेकिंग समथिंग इन दिस वी आर डूइंग द कन्वर्जन प्रोसेस यानी कि इनपुट्स को हम लोग किस में ट्रांसफॉर्म करते हैं गुड्स और सर्विसेज में इनपुट्स आर नथिंग बट द रॉ मटेरियल्स और एनी अदर थिंग विच यू आर यूजिंग फॉर द प्रोडक्शन पर्पस जैसे कच्चा माल रॉ मटेरियल आई विल गिव यू द सिंपल एग्जांपल वुड लकड़ी लाके आप जब उसको फिनिश गुड्स यानी फर्नीचर में कन्वर्ट कर देते हो तो वो आपका प्रोडक्ट बन जाता है यानी कि गुड्स और सर्विसेज बन जाता है तो प्रोडक्शन में आपने क्या यूज किया इनपुट में रॉ मटेरियल में वुड उस पर मैन पावर वगैरह आदमी लोगों ने काम करके उसको किस में कन्वर्ट किया फर्नीचर तो वो क्या हो गया आपका मतलब वो क्रिएट हो गया एक यूटिलिटी क्रिएट हो गया ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया इट कम्स अंडर फॉर्म यूटिलिटी क्योंकि वुड का आपने शेप साइज चेंज करके उसको फर्नीचर में कन्वर्ट किया है तो वो किस में चला गया फॉर्म यूटिलिटी में यूटिलिटी के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं तो उसमें एक टाइप है फॉर्म यूटिलिटी तो प्रोडक्शन में आपको ये ध्यान देना है कि इट इज डिफाइंड एज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे आप इनपुट्स को ट्रांसफॉर्म करते हो ताकि वो गुड्स एंड सर्विसेज में आप कन्वर्ट कर सको तो इकोनॉमी का फर्स्ट कंपोनेंट आपका जो है वो क्या है प्रोडक्शन के बाद सेकेंड कंपोनेंट जो है वो है आपका कंजम्पशन मीन्स एनीवन नो द डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर एंड कस्टमर कंज्यूमर और कस्टमर के बीच में डिफरेंस कंज्यूमर वो होता है जो गुड्स को कंज्यूम करता है यू कैन कॉल हिम एज द फाइनल यूजर ऑफ द प्रोडक्ट और कस्टमर वो होता है जो गुड्स खरीदता है कभी कभी ऐसा होता है कि कस्टमर एंड कंज्यूमर इज वन एंड द सेम
जैसे मैंने ही खरीदा प्रोडक्ट, मैंने ही यूज किया, तो एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट आई एम कंज्यूमर ऑल्सो एंड आई एम कस्टमर ऑल्सो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कस्टमर कोई और होता है और कंज्यूमर कोई और होता है। यहाँ पे वर्ड कंजम्पशन, कंजम्पशन मीन्स इट इज मतलब कंजम्पशन प्रोसेस इज डन बाय द फाइनल कंज्यूमर, यानी कि यूजर ऑफ द प्रोडक्ट, जो भी है प्रोडक्ट को यूज कर रहा है उसके ऊपर है। तो कंजम्पशन पे एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है वो कंप्लीटली यूज्ड अप हुआ हो, यानी कि वो फाइनली यूज हुआ। तो इकोनॉमी का सेकेंड कंपोनेंट जो है वो क्या है? कंजम्पशन। गुड्स प्रोड्यूस होने के बाद वो जब चीजें मार्केट में आके जब वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद जो फाइनल यूजर होता है प्रोडक्ट का, उसको यूज करता है, और वो आपका कंजम्पशन प्रोसेस क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। तो कंजम्पशन प्रोसेस जो है वो आपका कंज्यूमर के थ्रू होता है, यानी कि द फाइनल यूजर ऑफ द प्रोडक्ट। these are the this we completed with two components. Now coming to the next slide, that is your third component of economy. Third component of economy is investment. Investment is nothing but it is a part of production which is committed for earning future income. ठीक है, इन्वेस्टमेंट नाम से क्या होता है? इन्वेस्टमेंट मतलब आप कहीं पे आ, अपना जो भी मनी है उसको आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करके रखते हो। किस में वो इन्वेस्ट किया जाता है? इन ऑर्डर टू अर्न इनकम इन फ्यूचर। तो इन्वेस्टमेंट भी एक पार्ट ऑफ प्रोडक्शन ही है, मतलब आप क्या कर रहे हो? उसको जमा करके कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हो ताकि आप फ्यूचर में उससे इनकम जनरेट कर सको। तो ये भी एक पार्ट ऑफ प्रोडक्शन में काउंट होता है, इसीलिए ये इकोनॉमी को रन करने के लिए फोर मेन कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट है। तो इन्वेस्टमेंट इसीलिए किया जाता है ताकि हम लोग फ्यूचर इनकम जो है वो जनरेट कर सके। ठीक है, मेनी पीपल आर डूइंग वेरियस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है, कोई गोल्ड में इन्वेस्ट करता है, कोई कहीं इन्वेस्ट करता है, कोई कहीं पे इन्वेस्ट करता है, कोई किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता है। ठीक है, ये सब क्या है? ये इन्वेस्टमेंट के लिए होता है ताकि फ्यूचर आपका सिक्योर हो जाए। तो इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी आपको फोकस करना है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द लास्ट component and very important component of economy, that is exchange. Exchange आपको पता है क्या होता है? Exchange means what? It is the process by which ownership is transformed या फिर transferred from seller to buyer for a consideration। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप एक्सचेंज करते हो तो ओनरशिप ट्रांसफर होता है। ओनरशिप किससे ट्रांसफर होता है? सेलर से बायर के पास। अब जैसे ही आप एक्सचेंज करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू वेंट ऑन अ शॉप टू परचेज अ पेन, व्हेन यू विल पे फॉर द पेन, यू हैव डन एक्सचेंज, मींस यू हैव पेड फॉर द पेन। सपोज यू हैव परचेज्ड अ 5 रुपी पेन। 5 रुपी पेन जैसे आपने सामने वाले को 5 रुपी पे किया, वो आपको पेन देता है। यहाँ पे ओनरशिप, वो पहले वो पेन का ओनर कौन था? शॉपकीपर यानी कि सेलर। लेकिन जैसे ही वो पेन आपके पास आया तो क्या हो गया? वो आप उसके मतलब आप उसके ओनर हो गए। तो यहाँ पे क्या ट्रांसफर हुआ है? ओनरशिप ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सचेंज में इट मीन्स द प्रोसेस बाय विच ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर। So these are the main four components of economy. The four main components are production, consumption, investment, and exchange. Understood? See, these things are not in your syllabus. These things I'm just giving you a detailed information about your economic structure, which we are following. Understood? Now coming to the next slide. In this slide, you will come to know about the types or organization of economy. मतलब कितने types है economy के?
तो इकोनॉमी के मेनली देयर आर थ्री टाइप्स विच वी आर फॉलोइंग इन आवर कंट्री। हमारे कंट्री में हम लोग तीन टाइप फॉलो करते हैं इकोनॉमी को रन करने के लिए। फर्स्ट इज मार्केट इकोनॉमी, जिसको आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हो और फ्री इकोनॉमी भी बोलते हैं। सेकेंड इज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, इट इज ऑल्सो नोन एज सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड कंट्रोल्ड इकोनॉमी। उसके बाद मिक्स्ड इकोनॉमी है लास्ट। अब इसको ये इकोनॉमी क्या है ये हम लोग स्टडी करेंगे। ये तीन टाइप्स ऑफ इकोनॉमी है जो हम लोग फॉलो करते हैं। फर्स्ट इकोनॉमी, कमिंग टू द फर्स्ट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी। See, these things are very important for you all to understand. These things are not in your syllabus, but ये क्या है वो आपको समझना जरूरी है। मार्केट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और फ्री इकोनॉमी, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस होता है, मतलब वॉट एवर इम्पोर्टेंट डिसीजंस आर देयर रिगार्डिंग प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज, इन्वेस्टमेंट, जो भी है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये मार्केट के ऊपर छोड़ दिया जाता है। मतलब इट इज बेस्ड ऑन मार्केट, यानी कि पूरा मार्केट के ऊपर ही छोड़ दिया जाता है, जिसमें आपको टू मेन चीजों पे फोकस करना होता है, और वो क्या है, फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब यहाँ पे आप डिमांड और सप्लाई के बारे में जब भी बात करते हो तो मार्केट के ऊपर छोड़ दिया, यानी कि जैसा आपके प्रोडक्ट का डिमांड है, द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज डिपेंडेंट ऑन यू, उसका प्राइस क्या रखना है। जैसे आपका प्रोडक्ट मार्केट में बहुत मतलब ज्यादा डिमांडेड है, यानी कि बिक रहा है, तो आप उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाओगे भी, इट टोटली डिपेंड्स ऑन ऑन यू ऑल। और सप्लाई भी आप ही के ऊपर छोड़ दिया है, और इसी के वजह से जो इट इंटरसेक्ट एंड डिसाइड द प्राइस एंड क्वांटिटी, और उसी पे प्राइस और क्वांटिटी डिपेंड करता है। अगर आपका प्रोडक्ट डिमांडेड है तो आप उसका प्राइस अगर ज्यादा भी रखोगे तो मार्केट में वो सेल होने ही वाला है। अगर आपका प्राइस मार्केट में, अगर आपका डिमांड नहीं है तो आपको उसका प्राइस कम रखना पड़ेगा, तभी आप पूरे मार्केट को पेनिट्रेट, यानी कि पूरे मार्केट को कैप्चर कर पाओगे। ठीक है, सप्लाई के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आप देखोगे तो मार्केट में अगर किसी चीज का सप्लाई ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली उसका प्राइस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर किसी भी प्रोडक्ट का सप्लाई बहुत कम है, कम आ रहा है, यानी कि प्रोडक्ट मार्केट में बहुत कम आ रहा है, उसका सप्लाई बहुत कम है, तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है ये आपका किस में आता है, मार्केट इकोनॉमी। ये हम फॉलो करते हैं इन केस ऑफ प्रोड्यूसर एंड इन केस ऑफ कस्टमर। ठीक है, ये हमारे इंडियन कैप इंडियन स्ट्रक्चर में ये इकोनॉमी, ये मार्केट स्ट्रक्चर फॉलो होता है। कमिंग टू सेकेंड पॉइंट, दैट इज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। ठीक है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी को सोशलिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं, कंट्रोल इकोनॉमी बोलते हैं। एज द नेम सजेस्ट, कंट्रोल्ड इकोनॉमी या फिर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी आप बोलते हो। तो यहाँ पे जो भी डिसीजंस होता है प्रोडक्शन के बारे में, एक्सचेंज के बारे में, या फिर कंजम्पशन के बारे में, गुड्स और सर्विसेज के ऊपर, ये कौन लेगा, गवर्नमेंट। मीन्स whatever decision, whatever important decisions, whether it is regarding production, whether it is regarding exchange, whether it is regarding consumption, सब कुछ किसके हाथों में है, गवर्नमेंट के हाथों में। यानी ऐसा इकोनॉमी जो गवर्नमेंट के हिसाब से चलता है, यानी गवर्नमेंट उसका पूरा डिसीजन लेता है, वो आपका किस में जाएगा, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में और सोशलिस्ट कंट्रोल इकोनॉमी। ठीक है, तो ये आपका सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में जाएगा। इसके बाद है तीसरा इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। मतलब यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट टू, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट डिसीजन गवर्नमेंट भी लेते हैं और मार्केट के ऊपर भी छोड़ा जाता है, यानी कि ऊपर का जो दो है वो उसके ऊपर उसका मिक्सचर है, इसलिए इसका नाम है मिक्स्ड इकोनॉमी। और इन इंडिया वी आर फॉलोइंग दिस इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। यहाँ पे कैसा होता है कि यहाँ पे हम लोग मार्केट के ऊपर भी छोड़ देते हैं कुछ कुछ डिसीजन, और कुछ डिसीजन जो है वो गवर्नमेंट भी लेता है। अंडरस्टूड? सो दीज आर द थ्री टाइप्स और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी का डिसीजन कौन लेता है, इट इज डिसाइडेड बाय मार्केट। ठीक है,
फिर उसके बाद मार्केट के सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए वो लोग डिसाइड करते हैं। एक होता है कंट्रोल्ड इकोनॉमी, इसका डिसीजन कौन लेता है? टोटल गवर्नमेंट। और तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमी, मतलब यहाँ पे दोनों इकोनॉमी फॉलो होता है, मार्केट इकोनॉमी एज वेल एज सम डिसीजंस आर टेकन बाय गवर्नमेंट आल्सो। So these are the types of organization or economy which we are following. इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ये आपने स्टार्टिंग में मीनिंग में पढ़ा, ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम मीन्स व्हाट? द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइजिंग आउट। किसके वजह से अराइज होता है? लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से। अगर हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे है, बहुत ज्यादा पैसा है, तो ये प्रॉब्लम अराइज ही नहीं होगा, ठीक है। ये इसका मेन कॉजेस इकोनॉमिक प्रॉब्लम का ये तीन कारण है। एक तो पहला कारण है कि आदमी की इच्छाएं जो है वो अनलिमिटेड है, यानी ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ठीक है। ये तीन कारण के वजह से जो है आपका इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होता है। रिसोर्सेज आर लिमिटेड, यानी हमारे पास रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, यानी हम पैसे कम है, लेकिन उससे हम लोगों को सेटिस्फेक्शन पूरा लेना है। उसके बाद तीसरा है आपका रिसोर्सेज है अल्टरनेटिव यूजेस। अब जो भी रिसोर्स आपके पास अवेलेबल होता है, जैसे पैसा है, मनी है, तो मनी को आप हर जगह पे इस्तेमाल करते हो, मतलब अल्टरनेटिव यूजेस। एक ही जगह पे पैसा इस्तेमाल होता है क्या? नहीं, मनी इज यूज एवरीवेयर। तो ये तीन मेजर प्रॉब्लम्स है, और इसी के वजह से जो है आपका इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होता है। बट इन दिस यू हैव टू फोकस ऑन two points, that is human wants are unlimited and resources are limited, ठीक है। resources have alternative uses, this is also a part of economic problem, but आपके syllabus point of view से ये दो चीजों पे ज्यादा फोकस किया है, human wants are unlimited and resources are limited, and with that limited resources we have to uh, make the person in a state where he is fully satisfied. Understood? तो ये आपका इकोनॉमिक प्रॉब्लम का पार्ट है। देन कमिंग टू द डेफिनेशन, सी economic definitions is given by various authors and everyone has focused on different aspects. Here we will see the contributions made by different authors including Adam Smith, Alfred Marshall, Lionel Robbins and Paul Samuelson. See, in this Adam Smith has given wealth oriented definition, means what his focus was on wealth, wealth मतलब धन संपत्ति, ठीक है। Alfred Marshall has given welfare oriented definition of economics. welfare oriented means what? लोगों के भले को ध्यान में रखते हुए, यानी लोगों के भलाई के बारे में सोचते हुए उन्होंने डेफिनेशन दिया है अल्फ्रेड मार्शल ने। लियोनल रॉबिन्स हैज गिवन द डेफिनेशन व्हिच इज बेस्ड ऑन स्केर्सिटी। किस पे बेस्ड है वो? स्केर्सिटी पे। स्केर्सिटी मतलब चीजों की कमी के ऊपर उन्होंने इकोनॉमिक्स रिलेटेड डेफिनेशन दिया हुआ है। और पॉल सैमुअलसन ने ग्रोथ रिलेटेड डेफिनेशन दिया हुआ है। ग्रोथ रिलेटेड यानी कि ग्रोथ को बढ़ावा देते हुए। सो ये इन लोगों ने अलग अलग फोकस करके डेफिनेशन बनाए। सो पर्टिकुलरली ये डेफिनेशन जो भी है ये डिफरेंट ऑथर्स ने दिया है, जिसमें से इन लोगों के नाम आपको याद रखने: एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल, लियोनल रॉबिन्स, पॉल सैमुअलसन। एडम स्मिथ ने कौन सा डेफिनेशन दिया है? वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन दिया है, धन संपत्ति के ऊपर। अल्फ्रेड मार्शल ने वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन दिया है। वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन मींस व्हाट? लोगों के भले को ध्यान में रखते हुए। लियोनल रॉबिन्स ने स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन दिया है, यानी चीजों की कमी को ध्यान में रखते हुए। और पॉल सैमुअलसन ने ग्रोथ रिलेटेड डेफिनेशन दिया। ग्रोथ रिलेटेड डेफिनेशन मींस व्हाट? आगे कैसे हम बढ़े या फिर आगे कैसे बढ़ा जा सकता है, उससे रिलेटेड उन्होंने डेफिनेशन दिया है, ठीक है।
सो इकोनॉमिक डेफिनेशंस व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स क्या है वो सबको पता चल गया है कि इकोनॉमिक्स जो है इट इज मेनली रिलेटेड विद मनी एंड इन दिस वी हैव टू फुलफिल the unlimited wants with limited resources so that human being is satisfied. आप अपना खुद का एक मीनिंग फ्रेम आउट कर सकते हो. तो अब हम लोग इन ऑथर्स की सोच क्या है, इन ऑथर्स ने हाउ दे हैव डिफाइंड economics from this point of view, from the point of view of wealth, welfare, and scarcity that we will study. Are you all getting? Now we will see the first definition given by Adam Smith. See, Adam Smith, they have given the description about the author. Adam Smith birth year is given and death year is given. His book An Inquiry into Nature and Causes of Wealth of Nations. It was published in the year 1776. In this, he has defined economics as science of wealth. Means what? उन्होंने economics को wealth बताते हुए ही define किया है. और उनके वेल्थ डिफाइन करते हुए उन्होंने सेकंड पॉइंट में देखो उसको डिफाइन कैसे किया है. ही एक्सप्लेन हाउ अ नेशंस वेल्थ इज क्रिएटेड. मतलब एक नेशन के पास धन संपत्ति वेल्थ कैसे क्रिएट हो सकता है. ही कंसिडर्ड दैट द इंडिविजुअल इन द सोसाइटी wants to promote only his own gain, and in this he is led by an invisible hand to promote the interest of the society, though he has no real intention to promote the society's interest. See what he is trying to say us कि यहाँ पे इंडिविजुअल जो भी होते हैं ना सोसाइटी में, मतलब एक ह्यूमन बीइंग, वो हमेशा क्या ट्राई करता है, खुद को किस तरीके से, खुद का विकास कैसे हो, यानी कि खुद को कैसे वो प्रमोट कर सके, यानी पर्सनल वेलबींग के बारे में जो है वो सोचता है कि पर्सनल वो किस तरीके से प्रॉफिट कमाए, पर्सनल कैसे आगे बढ़े. मतलब सोसाइटी के भले के बारे में वो लोग सेकेंडरी, मतलब वो इसका इंटेंशन सोसाइटी के भले के बारे में नहीं रहता, पहले खुद का भला वो सोचता है. ठीक है, मतलब खुद का वेल्थ कैसे बढ़ाए. तो एडम स्मिथ ने इसको साइंस ऑफ वेल्थ इसीलिए बोला है क्योंकि अगर आप इंडिविजुअलिस्टिक पैटर्न से सोचोगे, if you are thinking about individual as per individual point of view, you will come to know that we are first what we are trying to we are trying to improve ourselves. हम लोग अपने आप को improve करने की कोशिश पहले करते हैं कि किस तरीके से हमारा मतलब पर्सनल हमें कुछ मिले या फिर पर्सनल हम आगे बढ़े. ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी आपका होता है सोशल इंटरेस्ट. तो स्मिथ ने क्या डिफाइन किया है, इकोनॉमिक्स को वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन किया है, ह्यूमन वेलफेयर पे उसने फोकस नहीं किया है. ठीक है, रस्किन एंड कैरेलाइल condemned economics as a dismal science as it thought selfishness which was against ethics. यहाँ पे रस्किन और कैरेलाइल ने उनको डिसमिल साइंस में मतलब इसका नाम डिसमिल साइंस कर दिया. क्यों डिसमिल साइंस किया है, क्योंकि यहाँ पे सेल्फिशनेस बता रहा है, आदमी अपने बारे में खुद के बारे में सोच रहा है. आदमी जब खुद के बारे में सोचता है तो इट इज अगेंस्ट एथिक्स. ठीक है, मतलब एथिक्स के खिलाफ है, मतलब सही नहीं है. However, wealth is considered only to be a mean to end, the end being the human welfare. मतलब वेल्थ एक मीन है एंड तक पहुंचने के, लेकिन वो एंड जो है ह्यूमन वेलफेयर के बारे में ही बताता है. हेंस वेल्थ डेफिनेशन जो है वो रिजेक्ट हो गया और वो वेल्थ से किस पे शिफ्ट हो गया, वेलफेयर पे शिफ्ट हो गया. क्योंकि खाली वेल्थ के बारे में फोकस करते हुए आप इकोनॉमिक्स को डिफाइन नहीं कर सकते. मतलब दिस वाज द डेफिनेशन, दिस वाज हिज पॉइंट ऑफ व्यू, एडम स्मिथ पॉइंट ऑफ व्यू. वो एडम स्मिथ का पॉइंट ऑफ व्यू था, लेकिन उसको पूरी तरीके से वो लोग ने रिजेक्ट कर दिया. लेकिन फिर भी वो डेफिनेशन एक वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन नाम से हम पढ़ते हैं. ठीक है, सो दिस वाज योर वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन. वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन के बाद तुरंत वेलफेयर डेफिनेशन आया, क्योंकि वो वहां पे वो रिजेक्ट हुआ. वो रिजेक्ट होने के बाद सेकेंडली डायरेक्टली जो है वो वेलफेयर आया. तो वेलफेयर डेफिनेशन वाज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल. Professor Alfred Marshall, he has written a book named Principle of Economics, which was published in the year 1890.
इसके अंदर उन्होंने पॉलिटिकल इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स को एक स्टडी ऑफ मैनकाइंड बताया है, यानी कि लोगों के भले के बारे में सोचते हुए उन्होंने बताया है। इसके अंदर it examines that part of individual and social action which is almost closely connected with the attainment and with the use of the material requisite of well-being। मतलब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि इंडिविजुअल एज वेल एज सोशल एक्शन, दोनों एक्शंस का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कनेक्ट किया है। ठीक है, किससे कनेक्ट किया है कि मटेरियल का इस्तेमाल करके इट शुड फोकस फाइनली ऑन वेलबींग ऑफ ह्यूमन बीइंग। वेलबींग ऑफ ह्यूमन बीइंग यानी कि लोगों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, लोगों के बारे में सोचते हुए वेलफेयर डेफिनेशन बोला है। सी वेलफेयर डेफिनेशन में मार्शल के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ। मतलब इकोनॉमिक्स एक ऐसा स्टडी है जो ऑर्डिनरीली वी आर स्टडिंग आउट। इकोनॉमिक स्टडीज बोथ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन, मतलब इसके अंदर आप दोनों पार्ट स्टडी कर रहे हो, इंडिविजुअल भी और सोशल एक्शन भी। ठीक है, क्योंकि इसका मेन फोकस क्या है, टू प्रोमोट द इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ पीपल। तो ये दोनों चीजों पे को ध्यान में रखते हुए वी हैव टू प्रोमोट, मतलब लोगों के भले के बारे में सोचना है। मार्शल मेक्स अ डिस्टिंक्शन, मार्शल ये दो चीजों में डिफाइन कर रहा है, मटेरियल थिंग्स में और इमटेरियल थिंग्स में। मटेरियल थिंग्स आपको सब पता है कि विच कैन बी सीन, फेल्ट और टच, एग्जांपल बुक, प्राइस एटसेट्रा। और इमटेरियल मतलब सर्विसेज विच कैन नॉट बी सीन, फेल्ट और टच। सो ये डेफिनेशन मार्शल सिर्फ मटेरियल थिंग्स को ध्यान में रखते हुए कर रहा है, इमटेरियल थिंग्स को ध्यान में रखते हुए ही इज नॉट डूइंग। आर यू ऑल गेटिंग? तो वेलफेयर वेलफेयर डेफिनेशन में एक ये लोग ने क्रिटिसिज्म भी बनाया हुआ है। इट कंसिडर्ड ओनली मटेरियल थिंग्स, मतलब इसमें से मटेरियल थिंग्स ही ले रहे हैं, इमटेरियल थिंग्स नहीं ले रहे, जैसे सर्विसेज को ध्यान में नहीं रख रहे। सर्विसेज में डॉक्टर का सर्विस, टीचर का सर्विस, ये सारी सर्विसेज को हम लोग ध्यान में नहीं रख रहे हैं। तो ये एक इसमें एक डिसएडवांटेज पार्ट आ गया है। मार्शल मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन those things that are capable of promoting welfare of people and those things that are not capable of promoting welfare of people। यहाँ पे इन्होंने डिस्टिंक्शन किया हुआ है कि जो लोगों को प्रमोट करने के लिए कैपेबल है और जो लोगों को प्रमोट करने के लिए कैपेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ही हैज गिवन लीकर, लीकर दैट इज नॉट केपेबल ऑफ प्रोमोटिंग वेलफेयर। लीकर जो है वो वेलफेयर के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी वो मार्केट में बिक रहा है एंड इट कमांड्स प्राइस। तो ये इकोनॉमिक्स का एक डिसएडवांटेज पार्ट दिखाता है। मार्शल डेफिनेशन इज बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर, लेकिन इसका कोई क्लियर कट डेफिनेशन अभी तक इन्वॉल्व नहीं है। इसीलिए ये डेफिनेशन भी जो है इट इज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल बट it does not came into existence। Understood students? So the definitions which is given, the definitions of economics which is given by different authors, that you have to keep into consideration in this. Main focus must be on this part, that is this one, the definition which is given by Adam Smith, that is wealth oriented definition, and the definition which is given by Alfred Marshall, that is welfare oriented definition. Other definitions are also there, but due to lack of time we'll do it afterwards. I'll discuss it in detail in our next session. So I hope so everyone enjoyed this session, and also you have learned many things. I have not started. I had not started the chapter yet. In the next session, we will move into chapter number 1 and chapter number 2. For the unit test, you will get two chapters, chapter number 1 and chapter number 2. So we have to go into detail. Hope so everyone enjoyed today's session.
We will meet in next session with description of each chapter in detail. Along with that, please try to make yourself engaged in learning process through this online and interactive sessions. I know that it is very difficult for you all because as we are not interacting with each other, but try to learn in this process. Thank you so much for your cooperation.